Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 41st lecture of this series of CPC. And in this lecture we would start with order 8. इससे पहले एक पॉइंट बताता हूँ. जो कोई व्यक्ति अदर अदर पर्सन को लीगल नोटिस भेजता है. ए पर्सन सेंड ए लीगल नोटिस टू अदर पर्सन, और वो व्यक्ति जिसको लीगल नोटिस भेजा है वो उस लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो क्या वो एडमिशन माना जाएगा उसके द्वारा? Would it be considered admission on his part by that party? Answer is that it would not be considered as a admission because it is not a proceedings in the court, because that is not a plaint, that is only a legal notice. हाँ, कोर्ट उसका ट्रायल में एडवर्स इन्फ्रेंस ले सकता है कि तुमने उसका जवाब नहीं दिया, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बट इट वुड बी टू दैट एक्सटेंट ओनली. ठीक, read rule 1. Order 8. The defendant shall, within 30 days from the date of service of summons on him, present a written statement of his defense. So here the first rule they are talking about, written statement आप कब फाइल करोगे, written statement आप कितने दिनों में फाइल करोगे. अब होता क्या है, दिस इज द डेट, मान लो दिस इज द डेट व्हेन द सूट इज फाइल्ड. This is the date you file the suit, and this is the date when the summons are issued by the court, and this is the date when summons is served. This is the date when the summons is served, actually served to the defendant. What this rule saying is कि जिस दिन defendant को summons मिला है, जिस दिन defendant को ये summons मिला है, उसके बाद 30 days के अंदर, उस दिन के बाद 30 days के अंदर द रिटर्न स्टेटमेंट हैज टू बी फाइल्ड. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. समन्स जिस दिन इशू हुआ उस दिन से नहीं, बट द डे व्हेन द समन्स आर एक्चुअली सर्व टू द डिफेंडेंट, उस दिन से 30 days के अंदर ही हैज टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट. रीड इट अगेन. The defendant shall, within 30 days from the date of service of the summons on him, present a written statement on his defense, provided that where the defendant fails to file the written statement within the said period of 30 days, he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing, but which shall not be later than 90 days from the date of service of the summons. Means within 30 days if he is not able to file the written statement, तो 30 days के बाद फर्दर उसको एक्सटेंशन मिल जाएगा. हाउ मैनी टोटल डेज? 90 टोटल. 90 डेज मतलब 30 के बाद 60 और मिल जाएगा, 60 डेज का और मिल जाएगा एक्सटेंशन. तो 30 + 60 is 90 डेज इन टोटल. तो 90 डेज का उसको मैक्सिमम पीरियड दिया जा सकता है, इंक्लूडिंग दैट 30 डेज. तो 90 डेज का टोटल पीरियड कोर्ट दे सकती है, बट एवरी टाइम व्हेन द कोर्ट गिव्स यू द एक्सटेंशन, द कोर्ट विल रिकॉर्ड द रीजंस, और आपको सफिशिएंट ग्राउंड प्रूव करना पड़ेगा. इट इज नॉट दैट ही हैज द राइट. अब लिखा तो है द कोर्ट शैल ग्रांट हिम, but that is not without any sufficient cause. So you have to prove some sufficient ground to court, then only the court will allow you. Read it again. The defendant shall, within the 30 days from the date of service of the summons on him, present a written statement of his defense, provided that where the defendant fails to file the written statement within the said period of 30 days, he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court. तो यहाँ पर he shall be allowed लिखा है ना, तो you may get confused that it is mandatory for the court to allow him, लेकिन जब तक आप रीजनेबल ग्राउंड प्रूव नहीं करोगे द कोर्ट विल नॉट अलाउ यू. ठीक, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. प्रैक्टिकली क्या होता है,
30 डेज बीतने के पहले आप पहुंच गए कोर्ट में कि एक्सटेंशन दे दो, तो ऐसा होता नहीं है। मान लो आपने रिटन स्टेटमेंट 45th डे पर फाइल किया, अब जब फर्स्ट हियरिंग होगी वहां पर द प्लेंटिफ विल रेज अ पॉइंट दैट द रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड आफ्टर द 30 डेज। अब there the court will seek explanation from you, and there you give the explanation to the court, and if you got sufficient explanation, the court will record the reasons and allow the written statement. तो रिटन स्टेटमेंट तो हम 45 डेज पे या 60 डेज पे दे चुके हैं, लेकिन जो डिले हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन आपको कोर्ट में देना पड़ेगा, एंड इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड देन द कोर्ट विल अलाउ द डिले विद रिकॉर्डेड रीजंस। ठीक, तो प्रैक्टिकली ये होता है, ऐसा नहीं होता है आप 30 डेज में नहीं कर पाए तो आप कोर्ट में जाओगे और टाइम मांगोगे। आप जा सकते हो प्रैक्टिकली, लेकिन नॉर्मली इन प्रैक्टिस एडवोकेट डू नॉट डू दैट, रेदर दे फाइल इट इन डिले, दे फाइल इट विद द डिले, और जो डिले होगा दैट हैज टू बी एक्सप्लेन टू द कोर्ट। ठीक, then they are saying the language is he shall be allowed to file the same on such other day as the case as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing, but which shall not be, लिखा है which shall not be, लिखा है which shall not be later than 90 days from the date of service of summons. अब there is a clear prohibition कि 90 डेज के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। There is clear prohibition that it shall not be beyond 90 days. अब suppose this defendant is not able to file the WS within 90 days also. Defendant 90 दिन में भी WS फाइल नहीं कर पाता है, तो क्या एक्सटेंशन होगा बियॉन्ड 90 डेज? अब if he came with some proper excuse, extraordinary केस में, some extraordinary circumstances में, तो उस केस में the court can go beyond 90 days also, but that is only in exceptional circumstances, because procedure cannot be used to defeat the ends of justice. Procedure cannot be used to defeat the ends of justice. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो लिखवा दूंगा मैं अभी, जजमेंट लिखवा दूंगा मैं अभी। अब मान लो कोई व्यक्ति 90th डे पे अपना WS फाइल करने चला कोर्ट के लिए, और 90th डे पे उसका एक्सीडेंट हो गया। अब दैट इज़ नॉट हिज फॉल्ट, आपने 90 डेज का टाइम दे दिया है, उसने टाइम मांगा एक्सटेंशन और आपने उसको 90 डेज का टाइम दे दिया एक्सटेंशन, तो 90th डे पे उसको फाइल करना उसका राइट है। He has the right to file on the 90th day. Now 90th day he goes to the court, but unfortunately he met an accident or he falls sick, and therefore he could not go to the court due to any unavoidable circumstances. Because he could not file it on the 90th day, though he has got a justifiable ground, accident, etc., will you defeat the ends of justice for the defendant by sticking rigidly to these words, shall not be later than 90 days? So here the court has held that the procedure is the handmaid of justice. तो इसको कई जगह पर हम यूज करते हैं इन वर्ड्स को। Procedure is the handmaid of justice means the purpose of the procedural law is to promote justice, and procedural law cannot be used to defeat the ends of justice, and procedural law cannot be used to defeat the ends of justice. ठीक, and therefore in extraordinary cases the court has the discretion to be liberal and allow the WS even after 90 days. ठीक, the court can be liberal and allow it even after 90 days. तो इसमें आप केस का नाम लिखिए,
बहुत सारे केसेस इसमें 4-5 हैं, तो लिखो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले उसको लिख लो। सो राइट डाउन फर्स्ट केस, कैलाश वर्सेस ननकू 2005 सुप्रीम कोर्ट, एंड देन सेलेवन एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वाले साइटेशन तो आपको पता ही है सबको। सेलेवन एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वाई के सबरवाल जस्टिस 2005 सुप्रीम कोर्ट, ये तो याद होगा सबको। देन राइट द अनदर वन, श्रीमती रानी कुसुम वर्सेस श्रीमती कंचन देवी एंड अनदर्स 2005 सुप्रीम कोर्ट। देन एक और है, मैसर्स आर एन जायदी एंड ब्रदर्स वर्सेस सुभाष चंद्र 2007 सुप्रीम कोर्ट। अब इतने सारे केसेस याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो याद कर लो, जैसे कैलाश वर्सेस ननकू, सेलेमन एडवोकेट्स, दैट इज सफिशिएंट। अब इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, उसको लिख लीजिए आप। पॉइंट्स हैं वो, आई एम डिक्टेटिंग फ्रॉम कैलाश वर्सेस ननकू वाला केस एंड सेलेमन एडवोकेट केस। राइट, फर्स्ट पॉइंट, procedure is the handmaid of justice and the procedure cannot be used to defeat the ends of justice. And even if there is a prohibitory provision, the court can read that as a directive provision wherein the court may be liberal in applying that provision. आगे लिखो, right? The court held that if for some extraordinary reason the defendant is not able to file the WS on the 90th day, then the court is free to allow the same. The same means what? The WS. The court is free to allow the same after 90 days. ठीक ठीक। अब आपसे एक सवाल है, ये जो कोर्ट परमिट करेगा आपको 90 डेज के बाद भी आप फाइल कर सकते हो, लेकिन इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस। अब द क्वेश्चन इज अंडर व्हाट प्रोविजन द कोर्ट विल परमिट यू। अब देखिए, इधर 151 में अलाउ नहीं होगा। 151 तब लगता है जब कोई प्रोविजन ना हो, दैट यू ऑलवेज रिमेम्बर। 151 will apply only when there is no other provision, and for this in CPC under order 8 rule 10 the court has power. It is not expressly provided, but the court has the power to pass any order in the interest of the justice. So the order of extending beyond the 90 days also can be passed under order 8 rule 10. अब एक बार ऑर्डर 8 रूल 10 निकालिएगा आप। वेयर एनी पार्टी फ्रॉम whom a written statement is required under rule 1 or rule 9 fails to present the same within the time permitted or fixed by the court, as the case may be, the court shall pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit, and on the pronouncement of such judgment a decree shall be drawn up. तो इसमें शुरू का पार्ट फिर से पढ़ो आप। वेयर एनी पार्टी फ्रॉम whom a written statement is required under rule 1, रूल 9 अभी भूल जाओ आप। तो अंडर रूल 1 fails to present the same within the time permitted or fixed by the court. अब आपको 30 डेज का टाइम मिला, आप नहीं कर पाए WS फाइल, फिर आपको एक्सटेंशन मिल गया, 90 डेज का एक्सटेंशन मिल गया। अब 90 डेज में भी आप फाइल नहीं कर पाए WS को, देन दे आर सेइंग एज द केस में बी द कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक्स फिट। तो ये वाला जो पार्ट है, और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू सूट एज इट थिंक्स फिट। अब यहाँ पे द कोर्ट विल गो फॉर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स या कोर्ट विल गो फॉर एक्सटेंडिंग द टाइम। मान लो 90 डेज का टाइम बीत गया और 90 डेज में आपने WS फाइल नहीं किया है, देन द कोर्ट कैन 90 डेज में अगर आपने फाइल नहीं किया है, देन द कोर्ट कैन
डायरेक्टली पास द जजमेंट, क्योंकि जब डिफेंडेंट ने WIC फाइल नहीं किया, देन मीन्स व्हाट, ही एडमिटेड द ऑल द प्लीडिंग्स ऑफ द प्लेंट। जब उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, मीन्स ही हैड एडमिटेड ऑल द प्लीडिंग्स ऑफ द प्लेंट, and therefore court can right away pass the judgment. या फिर court can go for ex parte proceedings. Court can go for ex parte proceedings means what? Recording of the plaintiff evidences. Or the third thing the court can do is the court can go for what? Extension of time. The court can go for extension of time. तो ये जो लिखा है ना एज इट थिंग्स फिट, तो उसमें ये तीनों बात आ जाती है। अब जजमेंट का तो यहाँ पर क्लियर लिख दिया है। अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स नहीं लिखा है, तो द कोर्ट कैन टेक एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स ऑल्सो और इट कैन एक्सटेंड द टाइम, एंड देयरफॉर 151 इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड दिस वाज हेल्ड इन कैलाश वर्सेस ननकू itself, that 151 is not required because the necessary order of extension can be passed under order 8 rule 10 itself। ठीक, तो इसको लिख लोगे आप अपने आप, that the necessary order can be passed under order 8 rule 10 itself। ठीक, तो आफ्टर एक्सटेंशन ऑफ 90 days में भी अगर कोई नहीं करता है तो कोर्ट कैन ऑल्सो प्रोनाउंस जजमेंट डायरेक्टली और go for the ex parte proceedings or extend the time। pronounce the judgment directly, why? Because he has not replied to the plaint, and when a person is not replying to the plaint, then the pleadings of the plaint are deemed to be admitted by the defendant। ठीक है, तो ये फर्क होता है कि प्लेंट का अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो वो माना जाएगा डीम्ड एडमिटेड, बट ऐसा केस वो नोटिस के केस में ऐसा नहीं होता। नोटिस का अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट इन्फ्रेंस कर सकती है, बट वो एडमिटेड नहीं माना जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक, तो ये 3 थिंग्स द कोर्ट कैन डू, एंड द पावर इज अंडर ऑर्डर 8 रूल 10 itself to extend further of 90 days। 90 days के बियॉन्ड भी एक्सटेंड करने की पावर ऑर्डर 8 रूल 10 में, ये आप लिख लेना अपने आप। Now come to order 8 rule 1A। You know that document has to be furnished at the time of the filing of the plaint। You have to furnish the list of documents that you are going to use in the trial। Similarly, at the time of the filing of the written statement, the defendant also has to present the list of documents, read, where the defendant bases his defense upon a document or relies upon any document in his possession or power in support of his defense or claim for set-off or counterclaim, he shall enter such document in a list and shall produce it in the court when the written statement is presented by him, and shall at the same time deliver the document and a copy thereof to be filed with the written statement। So basically the defendant has to file the written statement, then he has to furnish a list of documents, plus he has to furnish the copies of the documents, and this copies has to given to the plaintiff। The copies that the defendant will file, that will given to the plaintiff in the summons। Then further they are saying, where any such document is not in the possession or power of the defendant, he shall, wherever possible, state in whose possession or power it is। If suppose some document is not with the defendant, so he will state the person in whose possession it is, so that the court can issue the summons to get the documents। अब आगे कह रहे हैं, a document which ought to be produced in court by the defendant under this rule, but is not so produced, shall not, without the leave of the court, be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit। So this is important। Now suppose you have give the list of 10 documents
Now there is 11th and 12th document which you mentioned in the list, and later on at the trial stage you want to use that document. Later on at the trial stage you want to use that document. Now this document will not be allowed without the permission of the court. तो जो लिस्ट आपने पहले फर्निश किया है, तो दैट लिस्ट डॉक्यूमेंट यू कैन यूज इन द ट्रायल, बट एनी डॉक्यूमेंट विच यू हैव नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट, तो उसके लिए फिर आपको परमिशन लेना पड़ेगा. ठीक, रीड दैट थर्ड रूल अगेन, इट इज इम्पोर्टेंट. A document which ought to be produced in court by the defendant under this rule, but is not so produced, shall not, without the leave of the court, be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit. So the point is clear that a document, if is not mentioned in the list and has not been furnished, then that cannot be used by the defendant at trial unless the court allowed to be do so. But this rule will not apply upon certain kinds of documents, and that you will read in 4, sub-rule 4. Nothing in this rule shall apply to documents produced for the cross-examination of the plaintiff's witnesses or handed over to a witness merely to refresh his memory. So these documents which you are using for the cross-examination of the plaintiff's witnesses or for your own witnesses, you are using it for refreshing his memory. So these documents, on these two documents, sub-rule 3 will not apply. Means those documents you can produce your own later on without the permission of the court. So they are saying two kinds of document. One is document used for refreshing of memory. Of whom? Witnesses. Whose witnesses? Defendant's witnesses. Of the defendant's witnesses. And the documents used for cross-examination of the plaintiff's witnesses. And now you don't need to furnish these documents at the time of filing of the written statement, क्योंकि ये बाद में भी without the court's permission आप use कर सकते हो. These documents you can use later on also without the permission of the court. ठीक. Now you understand refreshing of memory if you have read Evidence Act 159, Indian Evidence Act, and cross examination वाले documents are 145, Indian Evidence Act. So those documents which you want to use in 145 or 159 Evidence Act, these will not fall in this category, and therefore they can be used later on even without the permission of the court. But any other document which you want to use at the trial stage, those documents you will have to produce in the list and you will have to furnish the document. ठीक. अब इधर से प्लीज यू शिफ्ट ओवर टू ऑर्डर 7 रूल 14. शिफ्ट अपॉन ऑर्डर 7 रूल 14. अब यहाँ पर भी सेम मिलेगा, सब कुछ सेम, लैंग्वेज भी सेम मिलेगी. बट ऑर्डर 7 रूल 14 अप्लाइज अपॉन द प्लेंटिफ, वेयर अ प्लेंटिफ sues upon a document or relies upon document in his possession or power in support of his claim, he shall enter such documents in a list and shall produce it in court when the plaint is presented by him, and shall at the same time deliver the document and a copy thereof to be filed with the plaint. So same language, you have to make the list of all documents and you have to submit the copies of the document. Where any such document is not in the possession or power of the plaintiff, he shall, wherever possible, state in whose possession or power it is, so that the court can issue summons. A document which ought to be produced in court by the plaintiff when the plaint is presented, or to be entered in the list to be added or annexed to the plaint, but is not produced or entered accordingly, shall not without the leave of the court be received in evidence
on his behalf at the hearing of the suit. Now again, the document which you have not furnished or that you have not mentioned in the list, unless the document is not introduced, that will not be allowed unless the permission of the court will be obtained. Then you see sub-rule 4. Nothing in this rule shall apply to document produced for the cross-examination of the plaintiff's witnesses or handed over to a witness merely to refresh his memory. Now again the same thing they are saying. They are saying nothing in this rule shall apply to the document used for cross-examination of plaintiff's witnesses and then refreshing memory. Now cross-examination of whom? Cross-examination of whom? अब plaintiff अपने witnesses का खुद तो cross-examination करेगा नहीं. So here it has to be defendant witnesses. अब यहाँ पर गलत लिखा है. They are writing it wrongly. They are writing cross-examination of the plaintiff's witnesses, but actually here the plaintiff will cross-examine the defendant's witnesses. And refreshing of memory is whom? Of the plaintiff's witnesses. So this is the mistake. And Supreme Court ने in Salomon Advocates में it is held that it is a legislative error and this is needed to be corrected. तो इसमें लिख लो आप एक sentence, right? In Salomon Advocates case, आप पूरी citation लिखना, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बोल रहा हूँ. आपको तो एग्जाम में पूरी citation लिखनी पड़ेगी तो किसी भी केस की जब रेफर करोगे तो. In Salomon Advocates case, the Supreme Court held that in Order 7 Rule 14 Sub Rule 4, the word plaintiff's witnesses is legislative error, and unless the Parliament make the correction, it should be read as defendant's witnesses. It should be read as the defendant's witnesses. ठीक मीन्स व्हाट? प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है दोनों से जो अभी तक हमने पढ़ा? प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, एनी डॉक्यूमेंट विच दे वांट टू यूज फॉर द ट्रायल पर्पसेस, द डॉक्यूमेंट विच द पार्टी इज गोइंग टू यूज फॉर द ट्रायल पर्पस, they have to furnish the list of all the documents. They have to furnish the list of all those documents, and if the document is not in the power and possession of the party, then they have to mention that in whose power and possession it is, and the court will issue summons. And they have to also, along with the list, they have to furnish the copies of those documents if they are in possession of those. But there is exception that certain documents need not be entered into the list and need not be furnished immediately at the time of filing of plaint or WS, and they are the documents which are be used for cross-examination of opposite parties' witnesses. और दूसरा, refreshing the memory of the parties, refreshing the memories of the parties' own witnesses. Refreshing memory of parties' own witnesses. ठीक. अब इसके बाद you have to move on Order 8 Rule 2. अब ये तो आपको पता ही होगा what is refreshing of memory. Refreshing of memory means at the time of giving the evidence by the witness, if he is forgetting the facts, then he can use the previous document to refresh his memory. That is in 159 Evidence Act. और डिटेल्स में आप इसको एविडेंस एक्ट में पढ़ोगे. Now come to Order 8 Rule 2. Now you see this Order 8 Rule 2, 3, 4, 5, they all give you the rules relating to pleadings in the written statement, pleadings in the WS. अब देखो what you have to appreciate is the plaint is already been filed. The plaint has already been filed. If there are so many pleadings in the plaint, the plaintiff had already filed the plaint.
and pleadings are there in the plaint paragraph wise, and the defendant is through the reply through his pleadings. Obviously the rule is that he will make a reply paragraph wise. The plaint का जो पैराग्राफ होगा उसका पैराग्राफ वाइज वो रिप्लाई करेगा. तो पैरा 1 का रिप्लाई पैरा 1 में, पैरा 2 का रिप्लाई पैरा 2 में. And that way, suppose there are 5 pleadings in the plaint. Now the defendant therefore make each reply to each of the pleadings in the, तो उसके भी कम से कम 5 प्लीडिंग तो होंगे. अब अगर वो चाहता है कि कुछ और वो प्लीड करे, इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स रखे, तो फिर वो अपना छठा सातवां एक्सेट्रा प्लीडिंग्स ऐड कर सकता है. बट मिनिमम 5 प्लीडिंग्स हैज टू बी देयर. जितने प्लेंट में प्लीडिंग्स हैं उतने वो रिप्लाई में जरूर करेगा पैराग्राफ वाइज. अगर ये पैराग्राफ नंबर 1 है तो ये पैरा 1 है तो इसका रिप्लाई पैरा 1 होगा. ये अगर पैरा 2 है तो ये भी पैरा 2 होगा, एंड सो फोर्थ. सो दैट इज द फर्स्ट रूल. दिस पैराग्राफ वाइज ही हैज टू मेक द रिप्लाई. And the second thing you have to keep in your mind is the pleadings of the plaint. This is the plaint and this is the WS. You cannot generally deny. अब मान लो प्लेंटिफ ने 5-7 पॉइंट लिखे हैं. अब मान लो डिफेंडेंट इज ए लेजी काइंड ऑफ पर्सन. अब उसने एक सेंटेंस में लिखा that I am denying all the pleadings of the plaint. That the defendant denies all the pleadings of the plaint. अब this cannot be done. You have to reply para wise. तो आप जनरल डिनाइल ऑफ ऑल द प्लीडिंग्स नहीं कर सकते. यू हैव टू रिप्लाई para wise. ठीक. तो एक तो नंबर 1 ही हैज टू रिप्लाई para wise. He will not make a general reply that I deny all the pleadings of the plaint. So one thing you have to keep in your mind that suppose the defendant want to deny every of the pleadings of the plaint. मान लो कोई प्लेंट है, उसमें कोई एक सेंटेंस एक प्लीडिंग है. अब दिस डिफेंडेंट वांट टू डिनाई दैट, सो ही हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड ही हैज टू राइट लाइक दैट द डिफेंडेंट डिनाइज या vehemently denies the pleadings of para number 1 of the plaint. तो इसको क्लियर लिखना पड़ेगा दैट आई एम डिनाइंग इट. He cannot afford to remain silent. He cannot afford to remain silent. In fact, वो ये भी नहीं लिख सकता कि that the defendant does not admit the pleadings of para number 1. ये भी नहीं लिख सकता वो. तो इन वर्ड्स से does not admit से भी काम नहीं चलेगा. So he have to file very specifically that the defendant denies the pleadings of para number 1. So there has to be a distinct denial. If he does not deny in as many words, it will be deemed as if he has admitted the pleadings of that pleading of the plaint. ठीक. अब मान लो ये प्लीडिंग है, थर्ड प्लीडिंग. अब मान लो डिफेंडेंट इस प्लीडिंग के जवाब में कुछ नहीं लिखता है. He does not write anything. So that means what? He has admitted that pleading. अब इस पैराग्राफ के रिप्लाई में अगर ये भी लिख देता है ना कि डिफेंडेंट की that defendant does not admit, then also it will amount to admission. So he has to write clearly that the defendant denies. The word denies has to be clearly mentioned. अब ये जो denial होगा that should be in substance. The denial be in substance. अब ये एग्जाम्पल से समझाऊंगा थोड़ी देर में. अब मान लो यहाँ प्लीडिंग्स में कुछ लिखा है प्लेंटिफ ने. अब उसका जो रियल सब्सटेंस है आप उसको डिनाई करोगे. यू आर नॉट प्लेइंग विद द वर्ड्स. अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा. वॉट एवर इज मैंशनड इन द प्लेंट दैट हैज टू बी डिनाइड इन सब्सटेंस एंड यू कैन नॉट प्ले विद द वर्ड्स. दैट आई विल एक्सप्लेन आफ्टर अ व्हाइल विद एग्जाम्पल. नाउ फर्स्ट we read rule wise. Rule number 2. Take first rule number 2. So read rule 2. The defendant must raise by his pleading all matters which
so the suit not be maintainable, so the suit not be maintainable, or that the transaction is either void or voidable in point of law, and all such grounds of defense as, if not raised, would be likely to take the opposite party by surprise, or would raise issue of fact not arising out of the plaint, as for instance fraud, limitation, release, payment, performance, or facts showing illegality. Now, what they are saying is that the defendant must raise in his pleading all matters which shows the suit not to be maintainable. So, what is that? That is preliminary objections. रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट को जितने भी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस हैं अगर उसके पास हैं तो उसको रेज करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, बार ऑफ लिमिटेशन, द बार अप्लाइज द सूट इज नॉट ट्राइबल, कोर्ट नॉट हैविंग jurisdiction, या बार ऑफ रेस जुडिकाटा. सो एनी सच काइंड ऑफ बार, जैसे पार्टीज बैड मिसजेंडर ऑफ पार्टी या नॉन जेंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, तो इस तरीके के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको रेज करने चाहिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट कैन ऑलवेज बी ऑब्जेक्टेड बाय द डिफेंडेंट ऑन द वेरियस ग्राउंड्स. So the defendant must raise by his pleadings all matters which show the suit not be maintainable, or that the transaction is either void or voidable in the point of law. Now suppose there is a contract, then you can always plead that the agreement was void, or the contract has become void because of the frustration. तो इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं वो आपको हमेशा रेज करने चाहिए और क्लियरली आपको रेज करने चाहिए, so that the very maintainability of the suit can be affected. And all such grounds of defense as if not raised, would be likely to take the opposite party by surprise. मतलब वो पॉइंट आपने अभी नहीं उठाया और उसको अगर आप बाद में उठाओगे तो देन द अपोजिट पार्टी इज सरप्राइज्ड. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेटिंग सरप्राइज्ड? अब देखो, व्हाट हैपेंस इज, प्लेंटिफ ने प्लेंट में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, मान लो 6 पॉइंट्स लिखे, तो प्लेंटिफ को ये तो पता है कि जो 6 पॉइंट्स मैंने लिखे उनका 6 का जवाब तो ये देगा. So these facts which the plaintiff has written, the plaintiff will acquainted with those facts. The facts which the plaintiff has written, the plaintiff is acquainted with those facts. So he obviously expects that there will be a reply to all these facts. ठीक? But at the same time he also aware that there may be certain facts or certain pleadings of which I am not aware and which the defendant will raise in his pleadings. तो plaintiff को उसके अपने pleading का तो पता है कि वो मेरे pleading का जवाब देगा, तो उसके pleading का जवाब देगा defendant, तो उसके लिए तो he will not get surprised because he already aware that this is my pleading and I will make so and so, and he can make any kind of reply to those pleadings. But the plaintiff will always be expecting that any additional point if the defendant has, he will raise in his pleadings, and if the defendant does not raise those points today, then maybe later on by the way of amendment of pleading, that will take the plaintiff surprise. Surprise means what? That I was expecting from you that these points be raised by you in the written statement, because whatever was there in your knowledge
You were expected to be write that in the written statement, but you did not. And later on, when you raise it, that surprises the plaintiff that why he does not raise that earlier. So these additional points which take the plaintiff surprise, when they write that plaintiff be taken by surprise, they mean the additional point which the defendant will raise apart from the pleadings to the plaint. तो फिर से पढ़ लो. The defendant must raise by his pleading all matters which show the suit not to be maintainable. The defendant must raise by his pleading all matters which shows the suit not to be maintainable. ये तो समझ गए आप. Bar of jurisdiction etc. Bar of res judicata etc. Then or that the transaction is either void or voidable. ये भी आप समझ गए. And all such grounds of defense as if not raised would be likely to take the opposite party by surprise. Now these are basically those additional grounds that the defendant will raise which are not merely reply to the pleadings of the plaintiff, but the plaintiff always expects that if the defendant has got some additional grounds, he will raise that in his written statement. And if he does not do it right now and he do it later on, that is what take the plaintiff by surprise. Then or would raise issues of fact not arising out of the plaint. So they are saying clearly वैसे फैक्ट्स जो कि प्लेंट से नहीं निकल के आ रहे हैं, मतलब कुछ एडिशनल फैक्ट्स. कुछ फैक्ट्स तो ऐसे होंगे जो प्लेंट से निकल के आए होंगे, उनका जवाब आपने दिया. तो कुछ फैक्ट्स तो ऐसे होंगे जो प्लेंट से निकल के आए, प्लेंट में आए, बट देयर मे बी फैक्ट्स विच द डिफेंडेंट हैड ओनली नोन इज एंड ही रेजेस दैट. सो these are not coming out of the plaint, and these facts are coming independently at the behest of the defendant. Or would raise issues of the fact not raising out of the plaint, as for instance fraud, limitation, release etc. अब ये जो फैक्ट्स हैं ये प्लेंटिफ थोड़ी रेज करेगा अपनी प्लीडिंग्स में, तो ये जो प्लीडिंग्स हैं दैट विल बी रेज्ड बाय द डिफेंडेंट. So these are some additional points. Basically you see these are the pleadings of the plaint. One expectation of the plaintiff is, मान लो इस प्लेंट में 4 प्लीडिंग है. अब one expectation of plaintiff is that the defendant will make a reply to all these 4 pleadings. But the other expectation is that the defendant may have certain other facts which is not coming out of the plaint, but which may be in the knowledge of the defendant. Maybe it is an objection to the maintainability of the suit. Maybe it is an objection regarding the void and voidability of the transaction. Or maybe it is any other kind of objection, any other kind of point. So these are the additional points which the defendant has to raise in order to make the suit comprehensive. अब इन्हीं एडिशनल पॉइंट्स के जवाब में बाद में प्लेंटिफ रेप्लिकेशन डालता है. जब रेप्लिकेशन फाइल करेगा प्लेंटिफ इन्हीं एडिशनल पॉइंट के लिए फाइल करता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. तो ये एडिशनल पॉइंट भी आपको रेज करना चाहिए, वेदर इट इज ऑब्जेक्शन ऑफ jurisdiction of the court or triability of the suit, or whether it is on merits, whatever, but you have to raise all these pleadings in order to make the suit comprehensive. Is that fine? अब इसमें एक केस लिख लो आप, उद्धव सिंह वर्सेस माधव राव सिंधिया 1976 सुप्रीम कोर्ट. ये वो टेकन बाय सरप्राइज वाला जो पॉइंट है उससे रिलेटेड केस है. इन दिस प्लीज राइट, it was held that those facts which arise from the pleading of the plaint, only will not surprise the plaintiff as he is already aware of those facts.
but the plaintiff expects that the defendant will raise all the additional facts which are within the defendant's personal knowledge, and the plaintiff expects him मतलब defendant to raise in them in his written statement. If if the defendant does not raise them initially and raises them subsequently, then what? Then the plaintiff will be taken by surprise. ठीक, दैट्स ऑल. अब आप रूल 3 में जाइए. इसमें ये डिनाइल का तरीका बता रहे हैं, हाउ टू डिनाई द प्लीडिंग. It shall not be sufficient for a defendant in his written statement to deny generally. मैंने बताया ना आपको कि एक लाइन में या एक पैराग्राफ में वो डिनाई कर देगा that I deny all the pleadings. तो वैसे डिनाइल नहीं कर सकते. To deny generally the grounds alleged by the plaintiff, but the defendant must deal specifically with each allegation of the fact of which he does not admit the truth, except damages. अब damages के लिए आपको अलग से जवाब देने की जरूरत नहीं है. No need to reply to that. But all the other pleadings the defendant must reply one by one parawise, and he must deal with them distinctly. तो हर प्लेंटिफ की प्लीडिंग को आप अलग से डील करोगे. अब अगर आप डिनाई भी कर रहे हो, बेशक आपको सेम सेंटेंस लिखना पड़ जाए, like defendant is denying para number 2, then defendant is denying para number 3. तो आप हर पॉइंट पर आप सेंटेंस लिखोगे, तो हर पॉइंट का आपको जवाब अलग अलग देना पड़ेगा. देन नेक्स्ट वन, where a defendant denies an allegation of a fact in the plaint, he must not do so evasively, but answer the point of substance. जैसे मैंने आपको बताया कि आपको substance of the pleading इसको deny करना होगा. You cannot just play with the language with the words. इसका एग्जाम्पल मैं अभी बताऊंगा. Thus, if it is alleged that he received a certain sum of money, it shall not be sufficient to deny that he received that particular amount, but he must deny that he received that sum or any part thereof, or else set out how much he received. And if an allegation is made with diverse circumstances, it shall not be sufficient to deny it along with those circumstances. तो बेसिकली आपको जो प्लीडिंग्स है ना, प्लीडिंग्स का एसेंस आपको समझना होगा, एंड यू हैव टू डिनाई द एसेंस ऑफ द प्लीडिंग. यू कैन नॉट जस्ट प्ले विद द वर्ड्स. फॉर दिस सपोज टेक एन एग्जाम्पल. इन दिस सपोज द एलिगेशन इज, इसमें ए ने बी पर सूट किया है, एंड द एलिगेशन इज कि डिफेंडेंट बी ने प्लेंटिफ ए के एजेंट को मान लो कोई होटल है, होटल ताज मान लो, होटल ताज में रूम नंबर 250 एक पर्टिकुलर डेट को, मान लो 20 जुलाई 2015 को शाम को 5 बजे, ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड a particular time on that date at a particular place, on particular date and particular time 5 लाख रुपए का ब्राइब दिया. A particular amount is given as a bribe. तो प्लेंटिफ ने ये लिखा कि डिफेंडेंट ने मेरे एजेंट का नाम बताया, मेरे एजेंट को होटल ताज दिल्ली में रूम नंबर इतने में इस डेट को इस टाइम पर शाम को इतने अमाउंट का 5 लाख रुपए का ब्राइब दिया था या ब्राइब ऑफर किया था. अब मान लो इस तरीके कोई केस कर रखा है, सो ही हैज गिवन ऑल द डिटेल्स. अब हालांकि प्लेंटिफ को भी ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, वो सीधा लिख देता ही ऑफर्स टू
ही ऑफर्स ब्राइब टू माई एजेंट। वो तो आप बाद में ट्रायल में प्रूव करोगे कितना ब्राइब कब क्या, बट सपोज ही हैज रिटन लाइक दिस। प्लेंटिफ को भी ऐसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब डिफेंडेंट ने जवाब दिया इसमें दैट द डिफेंडेंट, अब व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ द प्लीडिंग ऑफ दिस प्लेंट, इसमें प्लेस, टाइम, डेट, अमाउंट ऑफ ब्राइब ये देना सब्सटेंस है या फिर ब्राइब देना सब्सटेंस है। इन दिस एग्जाम्पल द ब्राइब देना इज सब्सटेंस। अब इसमें क्या अमाउंट दिए, 5 लाख रुपए दिए या 2 लाख रुपए दिए, दैट इज द सब्सटेंस, या फिर ब्राइब दिया दैट इज द सब्सटेंस, द ब्राइब इज द सब्सटेंस। अब इसके रिप्लाई में डिफेंडेंट ने जवाब दिया दैट द डिफेंडेंट डिनाइज दैट ही ऑफर्ड 5 लाख रुपीज टू द एजेंट ऑफ प्लेंटिफ at Hotel Taj Delhi at 5 p.m. in room number so and so on date so and so at so and so time. अब मीनिंग देयर बाय व्हाट, अब मीनिंग देयर बाय व्हाट कि मैंने 5 बजे तो नहीं दिया, 4:45 बजे दिया था या 5:15 बजे दिया, तो मतलब तो यही हुआ। तो वो शब्दों के साथ खेल रहा है। वो कल को कोर्ट पूछेगा तुमने झूठ क्यों बोला, तो वो बोलेगा कि मैंने 5 बजे का लिखा था, 4:45 बजे का थोड़ी लिखा था, या फिर 5 लाख तो नहीं दिया था मैंने 10 लाख दिया था। मीन्स यू आर प्लेइंग विद द वर्ड्स, सो योर डिनाइल कैन नॉट बी evasive, you cannot play with the words, you should straight away deny that the defendant denies या vehemently denies having given any bribe to your agent, to his agent या to the agent of the plaintiff. So vehemently denies having given any bribe to the agent of the plaintiff. अब any bribe whenever, that he has not offered any bribe to agent of plaintiff at whatever date or whatever time, whatever place. So that is the denial in substance. अब जो पहले वाला मैंने बताया आपको डिनाइल, दैट इज प्लेइंग विद द वर्ड्स कि मैंने 5 बजे इतनी तारीख को कमरा नंबर इतने में उस होटल को इतना ब्राइब नहीं दिया। अब हो सकता है कि वो किसी और जगह दिया हो, होटल ताज की जगह किसी और होटल में दिया हो, कुछ और अमाउंट दी हो, किसी और टाइम पे या डेट पे दिया हो। सो इन सच काइंड ऑफ रिप्लाई द डिनाइल हैज टू बी इन सब्सटेंस। अब इसको लिख लो आप सेंटेंस में, राइट द डिफेंडेंट हैज टू फाइंड आउट द रियल एसेंस एंड इंटेंट of the plaintiff. The defendant has to find out the real essence and the intent of the plaintiff in a particular pleading, and the denial shall be of the essence and the substance of that pleading. The defendant cannot just evade the allegation of the plaintiff by just playing with the words. ठीक, फाइन, समझ में आया आपको? ठीक, तो आपने अभी तक इसमें 3 रूल देखे, मीन्स रूल 2 से रूल 5 तक 3 देख लिए। इन विच वन इज वेयर दे आर सेइंग कोई भी नया पॉइंट, एनी न्यू पॉइंट रिगार्डिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट एक्सेट्रा, दैट हैज टू बी रेज्ड बाय द डिफेंडेंट। दैट इज रूल नंबर 2, दैट इज रूल नंबर 2। ठीक, देन दूसरा, द डिनाइल हैज टू बी स्पेसिफिक, मीन्स पैरा टू पैरा जवाब, पैरा टू पैरा reply, and you cannot deny generally, like you write that I deny all the pleadings of the plaintiff. That is rule 3. Then तीसरा rule 4, that you cannot be evasive, means you have to deny, if you want to deny, you have to deny the substance or the essence of the allegations. अगर आपको डिनाई करना है तो आपको सब्सटेंस, एसेंस ऑफ एलिगेशन डिनाई करो, एंड यू कैन नॉट डिनाई बाय प्लेइंग वर्ड्स। तो वॉट एवर एलिगेशन वॉज देयर, उसका आप सब्सटेंस देखो, एंड यू जनरली डिनाई दैट सब्सटेंस विदाउट प्लेइंग विद द वर्ड्स। ठीक, अब 4th रूल जो है, दैट इज रूल 5,
तो रूल 4 में था कि आपको इन सब्सटेंस डिनाई करना पड़ेगा. You generally deny that substance without playing with the words. Now rule 5 is, that is, if you want to deny, then denial should be clear. ये पढ़ा नहीं है हमने. That is rule number 5. The denial should be clear. Means like this, the defendant denies. और अगर आप लिख देते हो और या फिर you are silent or you write any other words, or even if you write the defendant does not admit, so that is also not a way to write. Does not admit भी आप नहीं लिख सकते, आपको the word deny यूज करना पड़ेगा. और आपने अगर इनमें से कुछ भी लिख दिया, then it implies that you have admitted the pleading. You have admitted the pleading of the plaintiff. Does not admit also means that you have admitted the pleading of the plaintiff. अब इसके लिए आप रूल नंबर 5 पढ़िए. Every allegation of fact in the plaint, if not denied specifically or by necessary implication. Every allegation of fact in the plaint, if not denied specifically or by necessary implication. What is necessary implication means? What is necessary implication means? बहुत सारे प्लीडिंग्स हैं, तो 2-3 प्लीडिंग्स को तो आपने डिनाई किया, अब उसके डिनाइल से किसी और प्लीडिंग का डिनाइल दिखता हो क्लियर, that is by necessary implication. Means you deny certain pleading and from that denial, उसी का एक छोटा फैक्ट है जो कि आपने लार्जर कॉन्टेक्स्ट में डिनाई कर दिया. अब उसी लार्जर कॉन्टेक्स्ट का एक छोटा फैक्ट है, किसी प्लीडिंग के फॉर्म में है, उसी लार्जर कॉन्टेक्स्ट का एक छोटा फैक्ट किसी प्लीडिंग के फॉर्म में है, that obviously said to be denied by implication. So every allegation of fact in the plaint, if not denied specifically or by necessary implication or stated to be not admitted, और stated to be not admitted एक अलग सब क्लाउज है, कॉमा लगाकर लिखा है उन्होंने, कॉमा, और stated to be not admitted in the pleading of the defendant shall be taken to be admitted except as against a person under disability. Now, every allegation of the fact in the plaint, obviously the plaintiff will write the allegation of the fact in the pleadings. Every allegation of the fact in the plaint, if not denied specifically or by necessary implication or stated to be not admitted in the pleading, मतलब डिफेंडेंट ने ये भी लिख दिया कि आई do not admit, then also they are saying shall be taken to be admitted except as against a person under disability. What is meant by a person under disability? What is meant by a person under disability? That will be a person who is minor or unsound mind. तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को आप बोलोगे लीगल डिसेबिलिटी वाले पर्सन. तो इनके लिए अगर ऐसा है, तो इन्होंने अगर इस तरीके का डिनाइल किया है, तो वहाँ पर कोर्ट प्रिजम्पशन ऑफ एडमिशन नहीं मानेगी, रेदर द कोर्ट विल एग्जामिन फर्दर. लेकिन अगर किसी और डिफेंडेंट ने, ऐसे डिफेंडेंट के अलावा किसी और डिफेंडेंट ने अगर डिनाइल स्पेसिफिकली नहीं किया या फिर रिमेन साइलेंट, और इवन इफ ही राइट्स डज नॉट एडमिट्स, देन ऑल्सो इट विल अमाउंट टू अ डीम्ड एडमिशन. तो उसको बोलते हैं द थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन. ठीक, तो इस पे लिख लो आप, राइट डाउन. राइट, ऑर्डर 8 रूल 5 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड एडमिशंस या थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशंस. Order 8 Rule 5 provides for the theory of deemed admission, that is, in the cases where the defendant does not expressly deny a pleading of the plaintiff or remains silent or states that he does not admit that pleading, then it will be deemed that he has admitted the fact alleged in that pleading. ठीक, तो उस प्लीडिंग में जो फैक्ट अलेज्ड था
उसको उसने एडमिट कर लिया ऐसा माना जाएगा। कब माना जाएगा? जब प्लेंटिफ के जवाब में डिफेंडेंट ने कोई एक्सप्रेस डिनाइल या बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन डिनाइल नहीं किया। He remains silent or he writes that I did not admit etc. So all these cases are the cases of deemed admission. तो ध्यान रखना, प्लेंटिफ के एलिगेशन के जवाब में डिफेंडेंट अगर साइलेंट रह जाता है देन इट इज अ केस ऑफ डीम्ड एडमिशन। इसमें आगे लिखो, राइट, दिस इज कॉल्ड एडमिशंस बाय प्लीडिंग्स and in such cases the court has a discretion to deem that fact proved by admission and therefore the court may not require the plaintiff to prove that fact by evidences. Therefore the court may not require the plaintiff to prove that fact by evidences. So it will not require the plaintiff to prove that fact by evidences. अब देखो what happens is, मान लो प्लेंटिफ ने कहा that there was a contract between the plaintiff and defendant on so and so subject matter. अब डिफेंडेंट ने रिप्लाई में ही आइदर एक्सप्रेसली एडमिट्स कह दिया कि हाँ देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, और या फिर ही रिमेन्स साइलेंट, और या फिर ही सेज समथिंग बट दैट इज नॉट अ डिनायल. In that case, what will the court deem? That the existence of the contract has been admitted by the defendant in his pleadings. तो उसी को बोलेंगे कि that admission by pleading. अब कोर्ट यहाँ पर उस फैक्ट को मान लेगी कि डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया, मतलब वो फैक्ट प्रूव हो गया. अब प्रूव एविडेंस से नहीं हुआ, क्योंकि एविडेंस तो आया ही नहीं अभी यहाँ पर, बट इट इज प्रूव्ड बाय द एडमिशंस ऑफ द प्लीडिंग बाय द डिफेंडेंट. एडमिशंस एंड प्लीडिंग बाय द डिफेंडेंट. Admissions and pleading by the defendant. ठीक. If I say that there was a contract and you say either expressly that yes there was a contract या फिर you remain silent, then admission हो जाएगा. And this fact is proved but not by evidences, but it is by your admissions. अब यहाँ पर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है that the court may deem the fact proved by admission and not require the plaintiff to give the evidence. But court also have the discretion that despite the admission in pleading, the court will still require the plaintiff to give his evidences to prove that fact. इसके लिए प्रोवाइजो पढ़ लो आप. Provided that the court may in its discretion require any fact so admitted to be proved otherwise than by such admission. Provided that the court may in its discretion require any fact so admitted to be proved otherwise than by such admission. मतलब the fact has been admitted by the other party either expressly or impliedly. अब express admission भी तो हो सकता है that the defendant has admitted the fact, और या फिर impliedly by remaining silent etc. That is implied admission. So the fact, since the other party is not controversing the fact, the other party उसको deny नहीं कर रहा, then what is the need of the taking evidences? Evidences तो आप तब लोगे ना जब दोनों पार्टियों में conflict हो. जैसे एक कह रहा कॉन्ट्रैक्ट था, दूसरा कह रहा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तब आप एविडेंसेस लोगे. लेकिन यहाँ पर अगर एक कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट था और दूसरा इम्प्लाइडली कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट था, देन वहाँ पर दिस फैक्ट इज प्रूव्ड बाय एडमिशन एंड देयरफॉर द कोर्ट विल नॉट रिक्वायर प्लेंटिफ टू गिव एविडेंस, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ तो प्लेंटिफ पे होगा, वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट था. सो द बर्डन लाइज अपॉन द प्लेंटिफ. सो फॉर दैट द court will not require to prove that fact by evidences if it is admitted. But still the court has the discretion to require the plaintiff, despite the admission, to require the plaintiff to give evidences on the fact. If court thinks that the fact is so important, वो कहते हैं ना कि justice not only be done but it seems to be done. Justice not only to be done but it seems to be done. So the court can ask to give the evidences to prove that fact. अब यही
यही पॉइंट आपको एविडेंस एक्ट में सेक्शन 58 में मिल जाएगा। तो यहीं आप ब्रैकेट में लिख लीजिए सेक्शन 58। जिन्होंने एविडेंस एक्ट पढ़ रखा है दे में रिकॉल दैट सेक्शन 58 का प्रोवाइजो एविडेंस एक्ट क्लियरली सेज सो। तो आप पढ़ लीजिएगा सेक्शन 58 प्रोवाइजो क्लियरली सेज that despite the admission in the pleading, the court may require, despite the admissions in the pleading, the court may require from the plaintiff to prove that particular fact. So whatever the language here, almost the same language is there in proviso of the section 58 evidence act. वहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि if the fact is admitted by pleadings, the court still has the discretion to require the parties to give evidences to prove the fact. ठीक, इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार। every allegation of fact in the plaint, if not denied specifically or by necessary implication or stated to be not admitted in the pleading of the defendant, shall be taken to be admitted except as against a person under disability. तो डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स माइनर और अनसाउंड को छोड़कर इन द अदर केसेस द थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन विल अप्लाई, बट माइनर और अनसाउंड के केसेस में थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन विल नॉट अप्लाई बिकॉज माइनर और अनसाउंड पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय द गार्जियन। सो गार्जियन में प्ले फॉल। मान लो गार्जियन ने रिप्लाई नहीं दिया या चुप रह गया या कुछ और लिख दिया, तो वहाँ पे अगर डीम्ड एडमिशन मान लेते हो तो नुकसान किसका होगा? उस माइनर और अनसाउंड पर्सन का होगा। सो देयरफॉर देयर द कोर्ट विल नॉट गो बाय थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन। लेकिन अदर केसेस में अब डीम्ड एडमिशन मीन्स व्हाट? ही हैज अलेज्ड समथिंग एंड बी हैज एडमिटेड। he has alleged something and B has admitted. ठीक, and if he has admitted means what? This is an admission on pleading. अब जब उस प्लीडिंग को एडमिट कर ही लिया बी ने, तो उस पर इशू फ्रेम करके ट्रायल लेने की ज़रूरत नहीं रही। अब इशू तो उस चीज़ पर फ्रेम होगा, उस पॉइंट पर फ्रेम होगा जिस पर कि कन्फ्लिक्ट हो। दोनों पार्टीज में कन्फ्लिक्ट है, उस पर इशू फ्रेम किए और एविडेंस रिकॉर्ड किए, और जब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है ही नहीं तो फिर एविडेंस किस बात के? ठीक, एंड देयरफॉर द कोर्ट में अवॉइड टेक एविडेंसेस। कोर्ट में अवॉइड फॉर टेकिंग द एविडेंसेस, बट स्टिल द कोर्ट looking at the importance of the fact, the possibility of any collusion between the plaintiff and the defendant, हो सकता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने कॉल्यूडेड रिप्रेजेंटेशन में किया हो तो एडमिट, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टिल द कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन टू रिक्वायर to give evidences, require the plaintiff to give evidences। और डिफेंडेंट तो एविडेंसेस देगा नहीं क्योंकि उसने एडमिट कर लिया, लेकिन द कोर्ट कैन स्टिल रिक्वायर फ्रॉम द प्लेंटिफ टू गिव एविडेंसेस टू प्रूव द फैक्ट। बट व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट ओनली द जस्टिस इज टू बी डन बट इट सीम्स टू बी डन। द जस्टिस डू नॉट ओनली टू बी डन बट इट सीम्स टू बी डन। तो वहाँ पर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एनी collusion between the plaintiff and the defendant, and to avoid that the court may ask the plaintiff to give evidences to prove the fact, and the section 58 का proviso also states the same, and provided that the court may in its discretion require any fact so admitted to be proved otherwise than by such admission। Otherwise means what? By evidences। ठीक, अब what we have seen is, मान लो एक प्लेंटिफ ने एक प्लेंट में 4 प्लीडिंग्स की हैं, मान लो ये 4 जवाब हैं इन रिटन स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट, दैट इज 1 2 3 4। अब पहला जो
है that is expressly denied. Defendant कहता है that he is denying the fact. अब दूसरे में he remains silent. In the third one he admits. And in the fourth one he says I do not admit. अब बताइए इसमें इशूज किस किस पर फ्रेम होंगे इन चारों में से? इसमें इशू खाली फर्स्ट पर फ्रेम होगा, सेकंड पे नहीं होगा, थर्ड पे नहीं होगा, एडमिट कर लिया एक्सप्रेसली, और फोर्थ में इसमें कहा डू नॉट एडमिट तो इसको भी डीम्ड एडमिशन मानते हैं, उस पर भी नहीं होगा। एंड देयरफॉर इशू सिर्फ पहले वाले पे बनेगा। अब द कोर्ट में प्लेस, अब इन तीनों में कोर्ट इशू फ्रेम करके प्लेंटिफ एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकता है एज पर द प्रोवाइजो। द कोर्ट में रिक्वायर द प्लेंटिफ टू prove the evidences, that is fine, but generally the fact which has been admitted, the court will not frame the issues and the court will not record the evidences, okay, because they are proved by admissions. But if the court finds that any of his pleadings is by collusion etc., if court finds, the court may require the plaintiff to prove those facts by evidences. ठीक, अब यहाँ पर जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, WS में डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के सारे प्लीडिंग्स को एडमिट नहीं किया है, 3 प्लीडिंग्स को एडमिट किया है, बट वन ऑफ द प्लीडिंग ही इज नॉट एडमिटिंग, इफ यू अप्रिशिएट दैट। वन ऑफ द प्लीडिंग ही इज डिनाइंग एक्सप्रेसली, बट 3 प्लीडिंग्स ही हैज एडमिटेड, जिसमें से कि थर्ड वाले को उसने एक्सप्रेसली एडमिट किया, सेकंड एंड फोर्थ आर एडमिटेड बाय इम्प्लीकेशंस। ठीक, अब उसको ध्यान में रखिएगा। अब नाउ लेट्स गो टू द सेकंड सब रूल, रूल 5 सेकंड सब रूल, वेयर द डिफेंडेंट हैज नॉट फाइल्ड अ प्लीडिंग। डिफेंडेंट ने प्लीडिंग फाइल ही नहीं किया, मीन्स व्हाट, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट ही फाइल नहीं किया, प्लीडिंग ही फाइल नहीं किया, मतलब डिफेंडेंट हैज नॉट फाइल्ड द रिटन स्टेटमेंट itself. When the defendant has not filed a pleading, it shall be lawful for the court to pronounce judgment on the basis of the facts contained in the plaint. It shall be lawful for the court to pronounce judgment on the basis of the facts contained in the plaint, except as against a person under a disability, but the court may, in its discretion, require any such fact to be proved. अब यहाँ पर इसमें और सब रूल 1 में क्या फ़र्क है, सब रूल 2 और सब रूल 1 में? सब रूल 1 में रिटन स्टेटमेंट फाइल हुआ है, लेकिन कुछ प्लीडिंग्स उसमें एडमिट हो गए हैं। सब रूल 1 में रिटन स्टेटमेंट फाइल हुआ है, लेकिन उसके कुछ प्लीडिंग्स एडमिट हो गए हैं, जबकि यहाँ पर आपने WS फाइल नहीं किया है। अब देखो, किसी एक प्लीडिंग का जवाब नहीं देना मीन्स व्हाट, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। किसी एक प्लीडिंग का जवाब नहीं देना मीन्स व्हाट, एडमिशन। 2 प्लीडिंग्स का जवाब नहीं देना मतलब दोनों का एडमिशन। अब किसी भी प्लीडिंग का जवाब नहीं देना मतलब क्या, सारे का एडमिशन। तो आप WS फाइल करो, सब कुछ लिख दो, लेकिन जवाब ना लिखो, देन एडमिटेड। और अगर WS आप फाइल ना करो, देन ऑल्सो द प्लीडिंग्स ऑफ द प्लेंट विल बी एडमिटेड। अब जिस तरीके से कोर्ट एक प्लीडिंग के लिए डीम्ड एडमिशन मानता, कोर्ट में नॉट रिक्वायर्ड टू बी एविडेंस, अब उसी तरीके से सारे प्लीडिंग्स के लिए इफ देयर इज नो रिप्लाई, देन द कोर्ट विल डीम ऑल द प्लीडिंग्स टू बी एडमिटेड एंड नॉट रिक्वायर द एविडेंस एंड पास द जजमेंट अपॉन इट। क्योंकि जब डिफेंडेंट ने कोई जवाब ही नहीं दिया, और डिनाइल ही नहीं किया, तो इशू किस पे फ्रेम करोगे? तो कोर्ट सारे के सारे प्लीडिंग्स को प्रूव्ड बाय एडमिशन मानते हुए, प्रूव्ड बाय प्लीडिंग मानते हुए, द कोर्ट कैन गो ऑन टू पास द जजमेंट, और द कोर्ट में एज पर द प्रोवाइजो ऑफ सब रूल 1, उसी तरीके से कोर्ट में रिक्वायर द प्लेंटिफ टू प्रूव सम ऑफ दिस प्लीडिंग्स बाय एविडेंसेस। तो जो सब रूल 1 का जो लॉजिक है, द सेम लॉजिक अप्लाइज here also. The only difference is कि sub rule 1 में you have filed the written statement and in sub rule 2 it is like this, ये plaint है but there is no WS on other side. अब जब WS है ही नहीं, then means what,
then each of the pleadings of the plaintiff is deemed to be admitted, and if each of the pleadings of the plaintiff is deemed to be admitted, then the court can consider that all the pleadings are proved by the admission, and the court will not frame any issues, and the court will pass a judgment on the basis of what? On the basis of the pleadings of the plaintiff, or the court may require the plaintiff to prove some of these facts, and after that the court will pass the judgment. So the larger context is subrule 2, and the narrower one is regarding some pleading is subrule 1, लेकिन लॉजिक दोनों का सेम है. ठीक, तो जैसे इधर एक प्लीडिंग पे कोर्ट कह सकता है कि मैं इस पे एविडेंस नहीं लूंगा, इसको प्रूव मानूंगा क्योंकि एडमिटेड है, और उसी प्रकार से यहाँ पर अगर किसी भी प्लीडिंग का जवाब नहीं आया तो कोर्ट कह सकता है कि मैं एडमिशन नहीं लूंगा और उस पूरे प्लेंट को प्रूव मानूंगा. और या फिर एज पर द प्रोवाइजो कोर्ट कह सकता है कि मैं कुछ फैक्ट्स का एविडेंस लूंगा. सो दैट द कोर्ट कैन डू, रीड इट अगेन, where the defendant has not filed a pleading, it shall be lawful for the court to pronounce judgment on the basis of the facts contained in the plaint, except as against a person under a disability, but the court may in its discretion require any such fact to be proved. So is that clear to all of you? So this is one of the most important areas of CPC for the interview purposes. ठीक, अब थर्ड सब रूल देखिए. In exercising its discretion under the proviso to subrule 1 or under subrule 2, the court shall have due regard to the fact whether the defendant could have or has engaged a pleader. अब मान लो डिफेंडेंट के पास कोई लॉयर नहीं है, इनफैक्ट द कोर्ट हैज़ टू अपॉइंट द लॉयर, कोर्ट इसको हेल्प करेगा, एंड कोर्ट विल प्रोवाइड अ लॉयर टू हिम, क्योंकि कई बार आप लॉयर की एडवाइस के बिना, इग्नोरेंस में, ए पार्टी में नॉट फाइल द रिटन स्टेटमेंट. अब मान लो डिफेंडेंट के पास कोई लॉयर नहीं है और उसको पता नहीं है कि रिटन स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ता है, और वो मान लो सम्मन देख के घबराया हुआ है कि कोर्ट नहीं जाऊंगा, और लॉयर कोई उसका है नहीं. So that has to be seen by the court. Court has to appoint the lawyer. अब कोर्ट कहाँ से करेगी लॉयर को एंगेज, कहाँ से करेगी उसको लॉयर कैसे देगी? तो हर स्टेट में लीगल सर्विस अथॉरिटीज होती हैं, तो फ्रॉम दो लीगल सर्विस अथॉरिटीज lawyer was provided to the court for helping those poor people or needy persons which are not having the lawyers, subject to certain terms and conditions. Then fourth clause, whenever a judgment is pronounced under this rule, a decree shall be drawn up in accordance with such judgment, and such decree shall bear the date on which the judgment was pronounced. ठीक, that is fine. अगर ये रूल नहीं भी होता तब भी, सब रूल नहीं होता तब भी that is fine. It means कि जब भी जजमेंट होगा, जजमेंट के बाद डिक्री पास होगा, और डिक्री के लिए आपको सील लगाना पड़ता है. अब देखो, a decree is followed by a judgment that is pronounced by the court after the hearing the case. डिक्री के लिए फीस लगाना पड़ता है, तो जब भी जजमेंट होगा सील वील लग जाएगी, मतलब साइन वाइन हो गए, और जजमेंट के बाद आपको फीस लगाना पड़ेगा. यू हैव टू डिपॉजिट फीस एंड द डिक्री विल बी पास्ड. अब डिक्री विल हैव द सेम डेट एज ऑफ द जजमेंट. शायद बेशक से डिक्री 3 महीने बाद पास हो रहा है, पर डेट उसका सेम होगा जिस दिन जजमेंट पास होगा. सो डिक्री एक्चुअली पासेज ऑन द डेट ऑफ जजमेंट. तो वही लिख रहे हैं यहाँ पर, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. ऑर्डर 20 पढ़ोगे, यू विल फाइंड दिस, that whenever a decree is drawn after the judgment, the decree will bear the same date as that of the judgment. ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर 8 रूल 10. अब अगर आप रूल 5 समझ में आ गया तो 10 आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं खास. तो बट वी वुड कंटिन्यू दैट
in the next lecture, other rules. That's it for this lecture. Thank you.